Sapnesh, sir. find out how many have joined in YouTube. Nikhil. Once Nikhil gets the update, we'll start in 3 minutes. Okay. Hey, Nikhil, how many have joined in YouTube? Okay. 25 there and 30 here. Yeah, there are. We'll wait for 2 more minutes and then start. Okay, sir. Shall we start, Vaibhav, sir? Yes, we can start. Yes, we can start. Pednekar, sir? Yes, sir. Yes, sir. I'm ready. Sushanti, ma'am, please take over. A warm good morning to everyone present here. On behalf of IQAC,
and Department of Environmental Studies. I welcome you all to this webinar on energy conservation. In the past few decades, our energy needs and consumption has increased multifold. This unmitigated and rampant exploitation of resources is leading to a number of ill effects, including climate change. Throughout history, our ancestors focused on minimal subsistence. It is time for us to now imbibe those virtues and learn how to sustain our lifestyle by minimizing consumption, preventing exploitation, and making optimal use of resources. To guide us in this direction, we have with us our resource person for today, Dr. H.M Pednekar. Welcome, sir. We look forward to an enlightening session. I now request our IQAC coordinator, C.A. Vaibhav Banjan, to address the gathering. Okay. On behalf of IQAC of SIWS College and the principal and management of SIWS College, I give a warm welcome to our speaker, Dr. H.M Pednekar. Thank you. We are very, very thankful to you for accepting our invitation for the lecture on energy conservation with a very short notice. And you have agreed to have an online lecture. We are very, very grateful for that, sir. I would also like to acknowledge the presence of Ravindra Dev, the ex-head of the Department of Environmental Studies for this session. And I would also like to compliment Dr. Sapnesh Rangnekar for organizing this webinar for the benefit of our students. I would like to congratulate all the technical team and all the team for making this webinar possible within a very, very short notice. With this, I would like to welcome Dr. Sapnesh Rangnekar to give the theme of the webinar. Thank you, sir. Thanks a lot. So we are here today for this very important topic of the energy conservation. Thank you, Madam Sushanti, for that brief introduction. A very good morning to everyone here. Respected Principal Madam Dr. Manali Londe, she could not join because she was into outskirts with no connectivity. So she has sent her best wishes for the entire webinar. The IQAC coordinator and the Vice Principal, Shri Vaibhav Banjan, Vice Principal, Mrs. Neeta Khanulkar, and Vice Principal, Mr. Ayyappan Iyer, the teacher participants, and my dear students. We are here today to listen to an extremely experienced personality, Dr. H.M Pednekar. More than 40 years of experience in the field of teaching. He has retired as a principal of ACS College in Vikramgarh. Still, he did not leave his noble profession of teaching, but continues to be working as the Vice President of Navadrishti. He is the Director and Advisor of Konkan Geographers Association, Honorary Director of iFactor, and the Trustee of Adhyan Sanstha. His areas of experience include geography, cartography, environment, teaching aids, sex education, counseling, yoga, and hypnotism. He has written more than 80 books on geography and environment. His current mission in life is to prepare and donate innovative teaching aids to education institutions. On a personal note, he is a real mentor not only to the students, but also to the teachers teaching geography and environmental studies. As we said, we approached him on a very short notice. On Sunday, we talked to him. We requested him to either take the lecture on Monday or Wednesday. And being such a person from experienced faculty, because he has said, I need some time for preparing, and I would take the lecture on Wednesday. That shows the commitment that he has towards the subject. So thank you, sir, for accepting the invitation on a very short notice and addressing our students. For you, sir, we are eager to listen to you. Thank you.
Thank you, sir, for giving me this opportunity. I'll share the screen. Yes, sir. And I'm very much thankful to Principal Londe Madam, Vice Principals, IQAC Coordinator Vaibhav sir, Rangnekar sir, and my student and friend Devdar sir. So I'm very happy to be with you. So can we have presentation? Uh, and at the end of the session, if time permits, I would like to give few tips for the students which will help them in their study. Okay, can I do Yes. that, sir? Hello. Request to the students, if you have any questions, keep posting them onto the chat box. We will take all those questions at the end. Yes. So, it's, uh, our lecture is up to 12, no, sir? Yes, sir. So, conservation of energy. Is it visible, sir? Yes, yes, sir. Yes, sir. Can make it full screen if you. Uh, okay. So, next slide. When you define energy, it is there are two meanings of energy. One is related to abiotic things, and here it is the power that comes from coal, electricity, gas, etc., and that is used for producing heat or driving machines, etc. So this is the normal meaning of energy which we know. And second is we use the word energy related to our ability to be very active or to do lot of work without getting tired. Now, why I'm including both the definition, because after all, for conservation of energy, man is very important element, and without changing thoughts of man or without creativity of man, we cannot conserve energy. So when we say that change your thoughts and change your destiny, like that, changing the thoughts or our attitude towards energy conservation is very essential. Next definition. Next slide, please. So here, these energy resources are classified as fossil fuel. Now, why these are called as a fossil fuels? So you know the reason, because fossils are the remnants of the plants or animals, and these are found in the sedimentary rock. So, like that, when the trees or forest is buried under the soil or the layer of the earth, the water content in that forest or the wood is reduced, and then the coal which is formed. Coal is carbon, and this carbon actually is stored in the tree at the time of photosynthesis. The plants take up carbon dioxide, they release oxygen, and the carbon is stored. And that carbon, which is stored in the tree, it gets transformed into a coal. So, and so it is called as a fossil fuel. Similarly, the marine organisms, when they die, they go at the bottom of the floor, that is ocean, and where because of the layers on the earth, the hydrocarbons in their body, they get separated, and that is how the crude oil is formed. So these are the fossil fuels. Then there are renewable energy sources like solar energy and other. And the last one, which is newly developed by man, is a nuclear energy. Next one. So conventional energy sources are coal, petroleum, electricity, firewood, etc., even cow dung. Now we will find the scientists are worried because in a few days these will get exhausted or there are limitations. And so we'll have to find out new sources of energy. Next one. So these are non-conventional sources of energy. That is, we have solar energy, then wind energy, tidal energy.
That is, as the wave approach coastline, their back and forward movement can be used for rotating generators, and that is how the tidal energy is produced. Similarly, geothermal energy. The interior part of the earth is still hot, and hence, as you go deep, if you go 32 meters deep, the temperature increases by 1 degree Celsius. And so, this heat is utilized for converting water into steam, and this steam is used for rotating generators, and electricity is produced. Similarly, biomass and wave, tidal energy and wave energy is almost same. Next. So for future, we may have hydroelectricity, solar energy, wind, biomass, nuclear energy, wave energy, and geothermal energy. Next. So what is conservation? So it is the careful use of natural resources, avoiding wastage, so that the resource can be used for a longer period of time for present and future generations. I'll just give one example in order to understand the difference between conservation and preservation. Next slide, please. So these fossil fuels are getting exhausted, and say oil in 50 years, and then natural gas in 53 years, or coal in 114 years. So with the use of conservation, we can extend its use for a slightly longer period of time, so that the scientists will get sufficient time to develop new technology, and that will help to produce new energy at a cheaper rate. Now, I'll explain the difference between the conservation and preservation. सपोज लेट अस ऐसे सोचते हैं कि आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं और एरोप्लेन क्रैश हुआ और आप एक डेजर्ट में गिर पड़े और आप अकेले ही है वो एरोप्लेन क्रैश से बच गए। अभी आपके पास आप देखते हैं कि खाने के लिए कोई चीज नहीं बची है, सिर्फ एक छोटी बॉटल है, उसमें 4 बिस्किट्स है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी प्रिजर्वेशन का मतलब है कि वो 4 बिस्किट आप बिना खाए वैसे ही रखेंगे तो उसे प्रिजर्वेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर वो बिस्किट आप वैसे ही रखेंगे तो आप जिंदा रहना मुश्किल है। इसके लिए आपको तो खाना पड़ेगा। लेकिन आप ये बिस्किट ये थोड़ा केयरफुली खाएंगे, क्योंकि जब तक आपको दूसरे हेल्प नहीं मिलती या कोई सेटलमेंट नहीं मिलती या दूसरा आदमी नहीं मिलता आपको पानी या खाना देने के लिए, तब तक ये 4 बिस्किट का ही आपको सहारा है। तो आप क्या करेंगे कि वो बिस्किट का जितना आपको चाहिए उतना छोटा-सा टुकड़ा आप खाएँगे, जितना आपके हंगर के लिए सफिशिएंट है। दूसरी बात है, आप उसका वेस्टेज होने से रोक देंगे, कोई भी टुकड़ा नीचे नहीं गिर जाएगा, इसका ख्याल रखेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर डेज़र्ट में आपको कोई लिज़ार्ड मिला या दूसरे कुछ एनिमल मिले और उसे आप खा सकते हैं, तो बिस्किट की जगह आप अल्टरनेटिव फूड इस्तेमाल करेंगे, तो अपना बिस्किट थोड़ा-सा बच जाएगा। तो ऐसे करते-करते आप वो बिस्किट जब जब तक आपको खाना नहीं मिल रहा है, तब तक आप उसे कंज़र्व करने की कोशिश करेंगे। तो कंज़र्वेशन का मतलब है आपका इस्तेमाल रोकना नहीं है। You can use that resources, but you can avoid wastage, and you can think about alternative sources, and you can prolong the use of existing resources to a longer period of time, so that the scientists can develop different types of other energy resources. Next slide. So this I have explained to you. Next slide. So conservation is a mental and the mental attitude. Person A says, I am rich. I can use resources for my comfort. I'm not bothered about the others and not for future generation. This is a wrong attitude, but many people have this type of attitude. And our role is, as a NSS volunteer or college student, is to
change the attitude of such person through street plays or through exhibitions and so on. Now, person B says, I'm rich, I'm aware about the environmental problem, so I will use the resources carefully and help to conserve them for the future generation. So, this should be the attitude of all persons on the earth. Next one. So, what Gandhiji had said, it is a very important sentence. Earth has sufficient resources to fulfill the needs of everyone, but not the greed of anyone. तो बिकॉज ग्रीड हैज गॉट नो लिमिटेशन, वो जो आदमी की हव होती है वो कभी पूरी नहीं होती, और मुझे और ज्यादा चाहिए, लेकिन नीड जो है वो पूरे हो सकते। तो इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि पृथ्वी के पास देने के लिए बहुत है, और हम सबकी जो जरूरत है वो ऊपर वाला या नेचर या और फुलफिल कर सकते हैं। हम बोलते हैं हिंदी में, जिसने चोंच दी है, जिसने हमें पैदा किया है, वही चारा देगा। इसका मतलब है कि हमें पैदा करने से पहले उसने ये सोच के रखा है कि हमारा खाने का इंतज़ाम कब होगा। जैसे आपने देखा है कि कुत्ते जो होते हैं, उनका मेटिंग पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। वो उसी सीज़न में क्यों मीटिंग पीरियड होता है? क्योंकि कुत्ते के बच्चे जब पैदा होते हैं, तो उसकी माँ तो उसे गोद में लेके दूध नहीं पिलाएगी। वो कहेगी कि अपना खाना खुद ढूँढ ले। तो वो कुत्ते का छोटा बच्चा है, उसे खाने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। और जब वो कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, तब छोटे मेंढक या छोटे है, उसका खाने का इंतज़ाम भी वो करता है। लेकिन ये जो आदमी की ये है कि एटीट्यूड है कि मुझे ही चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं वेस्ट कर दूँगा या बर्बाद कर दूँगा। ये एटीट्यूड एनिमल्स में नहीं है, आदमी में ही है ज़्यादा, और इसके लिए हमें ट्रेनिंग की या ये समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Hence, it is necessary to create awareness about the conservation and change the mindset of the people. This I explained to you. Next slide. So, see, God has given us, or that is a wonderful gift. That is our mind. Now, there are two parts of mind. One is subconscious mind, and other is conscious mind. कॉन्शियस माइंड मीन्स हम जिसे जानते हैं वो है कॉन्शियस माइंड। अभी आप सब स्टूडेंट है, आपने अपने बारे में कुछ तो सोचा होगा। क्या आपने सोचा होगा कि मैं इतना कुछ करूंगा, या मुझे जिंदगी में का ये बनना है वो बनना है, ऐसे आपने सोचा है। लेकिन वो जो है वो बहुत लिमिटेड है, वो जो आपने कॉन्शियस माइंड में सोचा है। ऊपर वाले ने आपको इतनी कैपेसिटी दी है, इतना पोटेंशियल दिया है कि आप उससे बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको हौसला होना चाहिए, आगे जाने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपने रुकना नहीं है। आप अगर हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, और ये अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। इसके ऊपर बहुत सारे किताब है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक किताब है। दूसरा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द स्पिरिट करके एक किताब है। ये किताब आप पढ़ेंगे और उसके मुताबिक आप अगर काम करेंगे, तो यू कैन एक्सप्लोर द potential of your subconscious mind and you can become successful in your life. अभी बी पिक्चर में हम देख रहे हैं, say when I'm talking to you and you are listening carefully to me, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो जो दो एरो दिखाए हैं, तो वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सीधा आपके अंदर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा। और समझो एग्जाम में वैसे आपको आप शांत बैठेंगे, तो वो पूरा आपको याद आएगा कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था।
अभी सी सिचुएशन ऐसी है कि आपने अगर समझो कॉन्शियस माइंड ने गड़बड़ कर दिया, जैसे कि आपका पेपर खत्म होने में 10 मिनट है और आपको याद ही नहीं आ रहा है, और आप इतने इम्पेशेंट हो जाते और ये कहते कि अरे भाई इसका आंसर क्या, मैंने तैयार याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो ये जो बात है कि आप कॉन्शियस माइंड में गड़बड़ करते, उसकी वजह से अंदर से कोई भी विचार है, थॉट्स है, वो बाहर नहीं आ सकते, और इसके लिए आपको वो याद नहीं आता। आप हैरान होके आंसर बुक दे के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आप बाहर जाते हैं, आपका सबको कॉन्शियस माइंड में जो डिस्टर्बेंस है वो दूर होता है और आपको वो याद आता है। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है, कोई भी सिचुएशन होने दो, या एग्ज़ाम होने दो, या कुछ एक्सीडेंट होने दो, या कुछ सीरियस प्रॉब्लम होने दो, टेंशन नहीं लेना है, और जितने आप शांत रहोगे, कीप योर माइंड काम, तो आपको उसका सॉल्यूशन ठीक से याद आएगा। नेक्स्ट वन। So, in environment, you will find all elements in the environment are interrelated and interdependent on each other. And that is why, so why I explain you this one related to mind, because it plays a very important role in the conservation of energy resources. Next one. So use of fossil fuels like coal, oil, etc. is directly related to environmental problems like global warming or increase in carbon dioxide, etc. Next one. So creating awareness about the environmental problem can help to conserve energy resources. उनके बारे में हमें थोड़ी जागृति समाज में करनी चाहिए. Next one. The root cause of environmental problem is the population explosion. Unfortunately, India ranks first in this natural production of human resources. So we'll have to control population. Now, why population? How it is contributing to the global warming? Say, man is a warm-blooded animal. I'll give one example. So when you are traveling in a crowded bus, आपको बस में सीट नहीं मिल रही है, और आपका नसीब ऐसे होता है कि आप जहाँ खड़े हैं उसके आगे वाली या पीछे वाली सीट वैकेंट हो जाती है। तो आप बोलते हैं क्या मेरा नसीब है, और कभी आपके बाजू वाली सीट खाली होती है तो आप झटके से बैठ जाते हैं। जैसे आप बैठ जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आपकी सीट गर्म है। अब ये गर्म किसने की? वो जो औरत या कोई आदमी वहाँ बैठा था, उन्होंने गर्म की। कहने का मतलब है, वी ऑलवेज एमिट हीट from our body. तो because we are warm blooded animal. So एक आदमी पृथ्वी पर बढ़ गया, इसका मतलब है कि वो जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज हीट का, वो ऐड होते रहेगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी आदमी खाएगा, कुछ काम करेगा, ट्रैवल करेगा, तो इसके लिए उसे एनर्जी रिसोर्सेज लगेंगे। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेंगी, उतने एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे, और इसके लिए पॉपुलेशन कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग का ये अवेयरनेस, ये आपको समाज में करना है। आप हम लोग तो करते ही है अपने एनएसएस या एनसीसी के ज़रिए, तो ये काम आपको अगर करेंगे तो उसमें देश का फ़ायदा है, ग्लोबल बेनिफिट है, और उस फैमिली का भी फ़ायदा है। नेक्स्ट वन। So, creating awareness about conservation of energy has got three benefits. One is at a global or national level, local level, and at home and individual level. तो ये सबका लिए ये फायदे वाली बात है। नेक्स्ट वन। So, say use of public transport instead of using cars. So one bus can carry 100 passengers. And if the 100 passengers are using 100 cars, that means the pollution or emission of carbon dioxide will be much more. So that is why public transport is preferred.
but buses, now there are electric buses also, or electric train is more preferable than the bus using petrol or diesel. Now, similarly, avoid use of air conditioning. Say, use of air condition has got multiple disadvantages. That is, say, ours is a warm country, and we try to use AC. That is, modify our environment in the office or home. When we come out of office or home, there is no AC. तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर चेंज का बुरा असर हमारे हेल्थ के ऊपर होता है और इसके लिए सबसे अच्छा है कि एसी का इस्तेमाल न करें। ऐसी आदत हम रखेंगे तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा और ये जो है अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे बाइसिकल यूज करने से आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है, ब्रीदिंग अच्छा होता है या लेग मसल्स अच्छे होते हैं और लेग मसल्स अच्छे होना ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट अटैक नहीं आएगा और इसके लिए कार यूज करने के बजाय मोटरसाइकिल यूज करने के बजाय बाइसिकल यूज करना सबसे अच्छा है। सिमिलरली रिड्यूस परचेसेस, हम कोई भी चीज समझो एक 5 रुपए की चीज भी खरीदते हैं तो वो चीज पैदा करने में या ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, सेल्स में कुछ तो एनर्जी लगी हुई है और इसके लिए अगर हम परचेस ही कम कर देते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि ये सब एनर्जी जो इसके क्रिएशन में लगी हुई है वो सब बच जाएगी। नेक्स्ट वन। तो ये दिल मांगे मोर, दिस वी नो, wants are never satisfied, they are unlimited, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो if you want to be successful in your life at young age, if you try to remain satisfied with whatever you want, say you can think about higher goals, you can try for that, but at the present moment whatever you have you should be satisfied with that. That is, with that satisfaction, you should work hard for getting more. But you should not remain frustrated or unhappy because you have something less than that of others. Next. So, how to make our home energy efficient? So, one is natural lighting. So, so instead of using table lamp or tube light, if there is a natural light in veranda or gallery, we can use that. That will provide you fresh air also, and it is good for health. Then rainwater harvesting. Say now it is made compulsory, but it will help to reduce the pressure or use of your uh, use of your um, uh, existing water can be reduced. Then utilize solar power. If possible, we can make use of solar power for generation of electricity or make using heat, that is solar heat, so that we can, instead of geyser, we can use solar energy for heating water. Then optimize window decoration, that is reduce AC or heater, and that is fresh air and light should enter into the room. Minimize your power outlay, that is जितने कम रहेंगे उतना और कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। अनप्लग योर सॉकेट, क्या होता है कभी कभी रात के सोते समय हम मोबाइल चार्जर जो लगाते हैं उससे मोबाइल निकाल लेते हैं और चार्जर वैसे ही वहां रहता है और स्विच ऑन रहता है। स्विच ऑन रहेगा तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन चालू ही रहेगा। आप उसे मोबाइल लगाइए या नहीं लगाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप सब स्विच सोने के पहले स्विच ऑफ करना ना भूलें। तो चार्ज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नीडेड, बार बार उसे चार्ज करके रखने में उसमें वेस्टेज है तो वो
अवॉइड कीजिए। तो अगर इंडोर प्लांट्स रहेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्प्शन होता है, ब्यूटिफिकेशन होता है और ऑक्सीजन भी आपको मिलता है। तो लाइट पेंट अगर घर में इस्तेमाल करेंगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, लाइट अंदर अच्छा रहेगा और आपको आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वॉशिंग मशीन भी 1-2 कपड़े के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। अगर फुल लोड होगा तो इस्तेमाल करने से आपका एनर्जी बच जाएगा। नेक्स्ट वन। So avoid changing devices, charging devices overnight. रात भर चार्ज करके रखने बुरी आदत है। कभी-कभी वो इंस्ट्रूमेंट जो मोबाइल है या दूसरे एक्सप्लोड भी हो सकते हैं या अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। एलईडी लाइट इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होता है। तो ये जो स्टार्स आपको दिखते हैं, जैसे आप फ्रीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर 5 स्टार दिखेंगे, 4 स्टार दिखेंगे। तो जितने स्टार ज़्यादा रहेंगे उतना वो इंस्ट्रूमेंट एनर्जी एफिशिएंट है। तो अगर आप उसका ये रेटिंग देखेंगे तो उससे बहुत सारा एनर्जी कंजर्व हो सकती है। और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप क्लीन कंडीशन में रखेंगे तो उसके लिए बिजली का जो इस्तेमाल होता है वो कम होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंटली वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। नेक्स्ट वन। So control your thoughts. This is very important because as we have seen earlier कि अगर आपके मन में ही नहीं है कि कंजर्वेशन करना है, मेरा पैसा है मैं बर्बाद करूंगा, वो मेरे लिए है, ये गलत है। आपका पैसा है ठीक है, लेकिन जो अर्थ है ये सबकी है एंड ऑल एलिमेंट्स इन द अर्थ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड दैट इज व्हाई एटलीस्ट वी शुड ट्राई दिस वन। सो रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशन। जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगी किसी के ऊपर जेलस मत हो जाओ, आप खुद के ऊपर ध्यान दो, हमें आगे बढ़ना है, जो भी है ऊपर वाले ने दिया है बहुत अच्छा है। जैसे बोला जाता है कि मेरे पास जूते नहीं थे इसके लिए मैं नाराज था, लेकिन मैंने जब एक आदमी देखा उसको उसके पाँव ही नहीं थे तो जूते कहाँ से पहनेगा। तो मेरे पास मेरे पाँव हैं तो जूते नहीं तो क्या है, कल मिल जाएंगे, नाराज होने की जरूरत नहीं है। बी सेटिस्फाइड विद द मिनिमम। This is the greatest thing which gives you lot of happiness. जो भी मिला है उसे खुश हो जाओ, ज्यादा पाने की कोशिश करो लेकिन नाराज मत रहो और बी हैप्पी एट एवरी मोमेंट। देखो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो आगे का सोचते नहीं, ते गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, मजे से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन एक आदमी जो है वो हमेशा टेंशन में रहता है और जो जिंदगी अच्छी तरह से जीना ही भूल जाता है। तो इसके लिए जो भी मिला है वो ऊपर वाले का आप शुक्रगुजार रहो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एडॉप्ट इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल का मतलब है बी वन विथ नेचर। जो भी आपके पास आजू-बाजू में है, उसके साथ में उसको तकलीफ न होते हुए आप कैसे रह सकते हैं, दैट इज़ इको फ्रेंडली लाइफ़स्टाइल। यूज़ कोल्ड वाटर फॉर बाथ। पहले थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसमें बिजली की बचत तो होगी और ठंडा पानी सेहत के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आप बाहर कहीं जाते हैं, तो वहाँ अगर गर्म पानी नहीं रहेगा, तो आपका स्नान रुकेगा नहीं और आपको गर्म पानी की ही आदत है, तो आपको गर्म पानी के लिए रुकना पड़ेगा, नहीं मिला तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि ठंडे पानी की आदत है, चाहे तो फैन। जितना भी हो सके बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और दैट इज यू कैन एनहांस योर कैपेसिटी। ना एसी नहीं रहेगा, फैन नहीं रहेगा तो गुस्सा मत होइए और उसमें भी रहने की अगर आपने कोशिश की तो आपका ये आपके लिए फायदे वाली बात हो सकती है। अवॉइड और रिड्यूस इनटेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम। कभी-कभी खाना, किसी के बर्थडे को खाना अच्छा है, लेकिन इसकी रेगुलर आदत मत डालो
क्योंकि आज आपका उम्र कम है, तो लेकिन जब आप 40-50 के हो जाएंगे तब इसका बुरा असर आपको तब मालूम होगा और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोन्स वगैरह ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ये आदत छोड़ दो। अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ पेपर और ज़ेरो। जैसे आपको पता है कि कोई भी पेपर है, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए पेड़ काटे जाते हैं। अगर आप पेपर का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपको वो कंजर्वेशन होगा और वो एनर्जी कंजर्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ टी, ये अलग से हिप्नोटिज्म का एक शो आपने देखा होगा। तो उसमें जिस आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है, उसे अगर करेला खाने के लिए दिया और उसे बोला कैसा मीठा लगता है ना, तो आदमी हाँ बोलता है। उसे वो कड़वा करेला मीठा लगता है। इसका मतलब है अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किया। मैं चाय पीता था, तो सोचा अभी चाय में दूध नहीं चाहिए, तो दूध डालना छोड़ दिया। शक्कर नहीं चाहिए, शक्कर भी डालना छोड़ दिया। फिर बोला इतनी पाउडर क्यों चाहिए? क्या मैं सिर्फ 2 ग्रेन्स डाल सकता हूँ? तो सिर्फ 2 ग्रेन डाले और वो चाय पी ली। मुझे अच्छा लगा, तो बोला ठीक है। बाद में सोचा वो 2 ग्रेन भी क्यों चाहिए? सिर्फ मैं गर्म पानी पीता हूँ और मन में कहता हूँ मैं चाय पी रहा हूँ, तो उससे भी मुझे सैटिस्फैक्शन मिलने लगा। कहने का मतलब है आप बोलेंगे ये पागलपन है, गर्म पानी थोड़ा ही चाय है। लेकिन अगर मेरा सैटिस्फैक्शन होता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है, जब बाहर मैं जाता हूँ कोई भी मुझे चाय देते हैं, तो वो चाय मेरे चाय से अच्छी होगी तो जो भी चाय मैं पीता हूँ, मुझे दुनिया की कोई भी चाय अच्छी ही लगती है क्योंकि मेरी चाय से वो अच्छी होती है। और लोग क्या कहते हैं, अच्छी चाय चाय अच्छी चाय दे, तो उनको लोग दूसरे लोग जो चाय देते हैं तो उसमें वो कुछ ना कुछ ये कमी निकालते हैं। बोलते हैं अरे नहीं इसमें शक्कर ही ज्यादा है, शक्कर कम है, अरे दूध जला हुआ है, ऐसे है वैसे है। तो वो चाय उनको सेटिस्फेक्शन नहीं देती। तो अभी ये आपको सोचना है कि चाय का हर प्याला आपको सैटिस्फैक्शन कब देगा? जब आपके एक्सपेक्टेशन कम होंगे तो आपको दुनिया में खुशी ही खुशी मिलेगी। नेक्स्ट वन। So explore your potential to create awareness about the conservation energy and find path of success in life. तो ये बात अगर आपके समझ में आई है तो आप ये कोशिश करो कि खुद का जीवन जो है थोड़ा सा, जो जैसे राम का सेतु बन रहा था तो छोटी सी स्क्विरल हेल्प कर रही थी, तो किसी ने कहा भाई आपसे क्या होगा? बोले ठीक है मेरा 2 जो ग्रेन्स है सैंड के वो मैं डाल रही हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है। वैसे ही आपने अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर अमल किया और आपके घर से ही ये कंजर्वेशन करना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। नेक्स्ट वन। ये बहुत अच्छी कविता है, आप जिंदगी भर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी लगी। When I was young man, I wanted to change the world. अभी जवानी का जोश जो होता है, वैसे वो जवान बच्चे बोलते हैं मैं पूरी दुनिया हिला डालूंगा, दुनिया बदल डालूंगा। लेकिन आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू चेंज द वर्ल्ड। थोड़ी उम्र आगे बढ़ती गई तो मुझे पता चला अरे दुनिया बदलना आसान बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। देन आई थॉट टू चेंज माय नेशन। जाने दो दुनिया बदलना, जाने दो, मैं मेरा देश जो है वो बदलना चाहता हूँ। तो लेकिन बाद में मुझे ये भी पता चला मैं देश भी बदल नहीं सकता। फिर मैंने टाउन के ऊपर फोकस किया, वो भी नहीं बदल सकता। फिर मैं बहुत थक गया और बुढ़ापा भी बढ़ते गया। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी मैं मेरी फैमिली को चेंज करता हूँ, वो भी नहीं हुआ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ, नाउ एज एन ओल्ड मैन आई रियलाइज दैट ओनली थिंग आई कैन चेंज इन माई सेल्फ। तो मैं अभी खुद को ही बदल सकता हूँ, बाकी दूसरे किसी को बदल नहीं सकता। एंड सडनली आई रियलाइज
और तभी मुझे पता चला, अरे ये बात मुझे तब पता चली होती तो जब मैं जवान था तब मैं मुझे ये पता होता तो मैंने अगर खुद को बदल दिया होता, आई कुड हैव मेड इम्पैक्ट ऑन माय फैमिली। मेरी फैमिली मेरे साथ बदल गई होती और उसका असर हमारे टाउन पर गिरता या देश पे गिरता और ये सब बदल जाते और शायद दुनिया पर भी गिरता, दुनिया बदल जाती। और इसका एग्जाम्पल है अन्ना हजारे या राजेंद्र सिंह। इन्होंने किनकी सलाह नहीं ली, उन्होंने लगा कि भाई ये काम मुझे करना है और वो करते चले गए और जैसे बोलते हैं वो आगे चलते गए और कारवां बनता गया। तो वैसे आप कुछ तो कुछ काम अच्छा करते जाइए। जैसे आपने गजनी पिक्चर देखा होगा, तो वहाँ एक अमीर आदमी है और एक गरीब लड़की है, लेकिन गरीब लड़के के एटीट्यूड या उसके बिहेवियर अच्छे हैं। वो जमीन का कचरा उठा के कचरे के बॉक्स में डालती है, कोई अंधा आदमी है उसको हेल्प करती है। वैसे आप जो भी है, एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू, तो आप दूसरों को कुछ मदद करते, पैसा ही देना ज़रूरी है ऐसे नहीं, कुछ अच्छे बोल दो, एनकरेज कर दो या कोई भी आदमी है, उसको कैसे समझाना है ये अगर आप सीख लेते हैं और उसे एनर्जी कंज़र्व करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और ये आप खुद कर सकते हैं। करके देखो और खुद को मन में जो आपने एक एम किया है, देखो अभी ऐसे हुआ है कि मैं जब छोटा था, तो ऐसे होता था, "भई क्या कर रहा है?" "अरे कुछ नहीं, बीए किया।" "कितने परसेंट?" 35%। तो "अरे चल, कल बैंक में जॉब है।" तो बैंक में जॉब मिल जाता था। आज क्या हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई और कंप्यूटर भी आ गए, तो आदमी की ज़रूरत कम हो गई। तो ये ग्रेजुएशन का होने के बाद क्या मुझे जॉब मिलेगा? सबको कैसे मिल सकता है? तो इसके लेकिन एक बात भूलना मत, देखो हमें ऊपर वाले ने तैयार किया है, तो ऊपर वाले ने सदाफुली के फूल भी तैयार किए, एक जैसे दिखते हैं ना, तो आदमी को क्यों नहीं एक जैसे किया? सब लड़के शाहरुख खान, सब लड़के यहाँ काजोल, एक ही ठप्पा मार देता चल जाता, लेकिन हमें उसने अलग-अलग तरीके से बनाया। सो यू प्लीज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल्स, आपके अंदर क्या है? अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को हेल्प करना, यू डेवलप दैट, दैट इज़ द गिफ्ट गिवन टू यू बाय गॉड एंड अगर वो आप डेवलप करते चलोगे, तो उसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे स्टीव जॉब कहता था कि छोटे बच्चे हैं, वो पिक्चर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो जो डॉट दिए हुए रहते हैं 1, 2, 3, 4, बच्चा 1 नंबर को 2 नंबर से जोड़ता है, 2 नंबर को 3 से और ऐसे नंबर जोड़ते जाता है, तो उसका पिक्चर पूरा होता है। तो स्टीव जॉब कहते हैं कि ऊपर वाले ने हम सबके डॉट दे के रखे, आप रुको मत, आप आगे बढ़ते चलो और आपका कॉलेज, आपके टीचर आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी देती है। आपको कोई कॉम्पिटिशन है, ये समझिए इलोकेशन कॉम्पिटिशन है, रंगोली कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी है। आप सब में हिस्सा लीजिए। समझो आपने एलोकेशन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, आप गए स्टेज पे और कुछ आप बोल नहीं पाए, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके आगे कुछ याद नहीं, लोग हँसे, आप नीचे आए, आपका अपमान हुआ, वो भूल जाओ, रात गई बात गई। लेकिन आपका इतना फ़ायदा हुआ, जैसे आप स्टेज पे जाके आए, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जितने ज़्यादा सर्टिफ़िकेट होंगे, उतनी ज़्यादा नौकरी मिलने की आपको हौसला ज़्यादा रहेगा। इट मीन्स यू आर क्रिएटिव और आप जो है इतने बेहया नहीं है, इतने बेशर्म तो नहीं है कि हर बार स्टेज पे जाएँगे, प्यारे भाइयों और बहनों, चलो मेरा सर्टिफ़िकेट दे दो। आप कोशिश करेंगे, जैसे पानी में कूदने से तैरना आता है, वैसे ही कॉलेज आपको बहुत सारी ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। So you participate in that, try to get more and more certificate, and along with that, think about your inner potentials, what God has given to you. Try to develop that, and you will find millions of ways
for your success. So, friends, I will stop here. Thank you very much for listening, patient listening, and wish you grand success in your life. Thank you very much. Thank you, friends. Thank you, sir. We now move ahead to a question answer session. We have three questions for you. I Yes. would read it out. Yes. So the first question is whether biogas is part of conventional energy. Uh, Biogas. Yes. Now, say biogas, we can have consider it as a uh, both way, but see, earlier the biomass was there, okay, but this technology which we have developed afterwards, that is how to whatever gas that was released earlier, that was going into the environment, but we developed that technology using that gas. We can that is technology to store that gas, and that is why I feel that it should be considered as a non-conventional. That is what is conventional. That is which we are using for a longer period of time in the past or in the history. While biogas we were not using in the past, the gas was merging it to the environment. So biogas is a technology which man has developed to store it and use it for the benefit of man. So we should consider it as a non-conventional energy. Okay, sir. Thank you. Sir, our next question. Please Yes. explain what is geothermal energy. Okay. Now, as I told you that the Earth was separated from the Sun, it was a hot mass of, say, gaseous thing. Then afterwards, it's cooled down. So outer surface cooled down, inner surface now still it is warm. Now, then there were explosions. There was heavy rainfall, and then that water gathered into the depression, and that is how the oceans were formed. Now, as we go deep down inside the earth, so say the distance from the surface of the earth to the center of the earth is 6371 kilometers. Now, it is impossible for us to go down, because as we go 32 meters of depth, then temperature increases by 1 degree Celsius. Suppose the surface temperature is 30 degree, then at 32 meters of depth, the temperature is 31 degrees. At 64 degrees, it is 32, and so on. So there is a rapid increase in temperature. So in geothermal energy, they dig two holes in the earth, and they pass water from one tube, and this water goes down. It comes in contact with the inner part of the earth, not so deep, but it gets sufficiently warm. It gets converted into vapor, that is steam, and that steam comes out from the other vent or other hole, and that steam is used for rotating these generators, and that is how the electricity is produced. It is called as a geothermal energy. Okay. Sir, our last question. How energy conservation can be done in biosphere? Energy conservation in biosphere. Say, biosphere means all these plants or animals, etc. So actually the root cause of all conservation is excess use of all these resources. So instead of using, say, the best thing to eat is non-veg food, because extremely sorry, we eat vegetarian, veg food,
because non-veg food, especially the meat, etc., it requires more, say, vegetables, or say more biotic food for those animals. And that is why, so the total energy in biomass is consumed is more for the non-veg food than that of the veg food. But that is, we cannot make compulsion, but if possible, we should change for veg food. The other thing is that we should not waste the material. That is, either it is the food or the things which we purchase and so on. So if we can reduce that, whatever our requirement is, if you can reduce that requirement and be satisfied with whatever we have, then definitely that can help in the conservation of biosphere. Similarly, for animals, etc., their animals are killed for their body parts and so on. So even we can stop that. The best thing about biosphere is whatever food we take. Say, there is a great similarity in the food and our study. Say, if we, it is said that we should eat the food which is a 32 times चबाना चाहिए. तो चबाने का मतलब क्या है? उसमें सलाइवा मिक्स होती है और सलाइवा मिक्स होने से उसका डाइजेशन अच्छा होता है. इसका मतलब है ज्यादा खाने से अच्छा है जो भी थोड़ा खाना है वो खाना आप समझो चबा चबा के खाएंगे, सलाइवा मिक्स हो जाएगी और इंटरेस्ट से खाएंगे तो थोड़ा खाना भी आपको ज्यादा एनर्जी देगा, पूरा डाइजेस्ट होगा. और अब अगर ज्यादा खाना खाते हैं और विदाउट च्यूइंग खाते हैं इतना बिना, तो उसमें पेट में जाके वो सड़ जाएगा और उसके आपके तकलीफ होगी. वैसे ही पढ़ाई आप अगर धीरे से करते हैं और चाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो जो भी पढ़ते हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और दुनिया में आप आगे भी बढ़ सकते हैं. लेकिन अगर आप लास्ट मिनट में तैयारी करते, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते और विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप याद रखने की कोशिश करते, तो वैसे आप खाना जो है ये पानी के साथ निगल जाते हैं वैसा है, वो पेट में सड़ जाएगा. तो वैसे उस नॉलेज का ना तो आपको फ़ायदा है, उल्टा नुकसान है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा. एग्ज़ाम में पता नहीं आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी में आपका नुकसान बहुत होगा. तो इसके लिए थोड़े से फ़ायदे के लिए ऐसे मत कीजिए, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई करेंगे, वो अगर आदत लग जाएगी, तो आपको वो बहुत अच्छा रहेगा. सो कंज़र्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज़ द मिनिमाइज़ इट्स यूज़ एंड ग्रोथ जो है, जैसे आप फल खाते हैं, वो जो सीड्स होते हैं वो जमा करके रखिए और मिट्टी के साथ मिला के उसके सीड बॉल बनाइए. और जब आप ट्रिप में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, तो ये सीड बॉल आप कहीं अलग-अलग जगह पे फेंक दीजिए. क्या जाने उसमें से 1-2 सीड उसमें से उसका पेड़ भी हो सकता है. तो जितना हो सके ये ट्री प्लांटेशन के लिए या उसके लिए आप मदद कर सकते हैं. That is the conservation for birds. Thank you. Sure, sir. Thank you for answering it so beautifully. So we have one more question from one of our faculty members, Rekha Bhatia ma'am. And the question is, how does the selection of right paint for our houses help in conserving energy? Okay. See, now it all depends on us. But suppose if the dark color is used, then especially black color use more energy. But still, the other colors which are dark, they absorb light. Reflection of light is less. And that is why in a room with a dark color, we require more light. So unnecessary, we are using that. But instead of that, suppose if we use white color or light color, then white color
reflect more energy. So our requirement of light is reduced. Only one tube light or one LED bulb is sufficient in that room. And that is how the paint, it is just a physics or science in that. That is the light color reflect more. Ji. That's all. Thank you. Thank you, sir. Swapnesh, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot Thank you. uh, for that lucid kind of a presentation and very sufficient answering of all the questions which are raised by students as well as the staff members also. A very energetic kind of a presentation covering all the relevant topics. Thanks a lot, sir. Again. Thank you, sir. You know? Thank you. I must thank Devdar sir also for and Ranekar sir, all of you for giving me this opportunity. Thank you. I'll be happy to help you in the future also. Yes, sir. Yeah, definitely, we'll be in touch because I have been listening about you from a lot of faculty members that you are doing workshops and teaching aids for teachers Yes, also. So we will try to associate with I Factor and do the workshop in the coming days. thank you, sir. Thank you. Hello. So Shanti ma'am. Can I request all the participants to please switch on their cameras for a group photo? Yes, done. Thank you, everyone. I would like to deliver a formal vote of thanks for today's session. Sir, it was truly a thought provoking presentation. The slides were beautiful and enlightening. One slide where you mentioned about the limited number of years for which our natural resources will last is scary. These resources would probably be sufficient for our generation, but it won't be available for our children and their children. We truly need to start changing our thoughts and our lifestyle and take the term sustainability very seriously. I'm sure students have taken note of the slides wherein there were tips on how to conserve energy, how to make our homes energy efficient, and they would act accordingly. Like Sir said, it will all start with first controlling our thoughts. I would like to thank our college management and our principal, Dr. Manali Londhe, for extending their support in making this wonderful webinar possible. I would also like to thank our IQAC coordinator and Vice Principal Commerce, CA Vaibhav Banjan, Vice Principal Science, Mrs. Nita Khanolkar, and our Vice Principal Self-Financing Courses, Mr. Ayyappan Iyer, for their support. I thank our technical support, Mr. Nikhil Mamania, for making this webinar successful. Last but not least, I thank all our student participants for being available during vacation. I hope they have made they will try and make the most out of this wonderful webinar. Thank you, everyone. Thank you, sir. Can I leave? Thank you, sir. Pednekar, sir. Thank you. Yes, sir. You can. Thank you. Thank you, Vaibhav, sir. Thank you, Ayyappan, sir, and all the teachers. Thank you to the students. Just fill up the feedback form. The link is there into the chat box on YouTube as well as on Google Meet.